real class. So ख़याम आप mic off कर दें. Now the recording is started. We would like to start with the presentation. So okay. Uh, Whatever you have in a question into the last lecture, please do ask, because don't leave it unresolved. If you don't know the concept, so it will become a difficult into the upcoming final exam. That will be a really a difficult one, because I don't have a very good experience. Everyone have gotten a good papers, so there should be some more tricky questions into the final exams. तो आप यहाँ पे you must जी have to be कैसे understanding. इससे और ज्यादा ट्रिकी होंगे। तो इसमें तो कुछ भी नहीं था यार, ये तो मैंने आपको आधे घंटे में जो है ना सारा सॉल्व करके दे दिया। तो सही है इसमें सर, तो ठीक कोई ऐसी खास, तो अब आप अपने कॉन्सेप्ट्स को देखें जी. यू शुड हैव एन एम टू अ गुड लर्निंग, एंड you should have in a conceptual studies here. You don't want to be a degree, सिर्फ डिग्री नहीं होती जी, ठीक है, आपको आना भी चाहिए चीज़ें. तो दो बिल्कुल तीन सर। चीजें इन दैट चैप्टर वी ऑलरेडी गोइंग टू बी स्टडीड. सो इनटू द फर्स्ट स्टेज एक्सेस की टेक्निक के अंदर व्हाट वी हैव दिस, द ऑपरेटर्स परचेज द फ्रीक्वेंसी, दैट इज अंडरस्टूड वी हैव. तो अगर यू फोन वाले हैं या बुबिलिंक वाले हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो सबसे प्रीशियस रिसोर्स को परचेज करते हैं. दैट प्रीशियस रिसोर्स इज सेड टू बी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम. लेट्स सपोज you phone buy a spectrum of a 10 megahertz. 10 megahertz के उसने तो सबसे पहले वो क्या करता है, what is the first step is going to be done. Let's suppose कि हमारे पास 2G की टेक्नोलॉजी है, तो फ्रीक्वेंसी की डिवीजन कैसे करता है, फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या करता है. Can anybody explain this? See that into the first stage, what is the total bandwidth purchase, जो भी आपकी total bandwidth purchase की गई है, that is going to be divided. Let's suppose we have a 10 megahertz band is purchased by the any operator. So at the first stage, it will do FDM, frequency division multiplexing. इस वक्त तक no band is allocated to any user. तो वो फ्रीक्वेंसी के बैंड के छोटे छोटे बैंड्स बना देता है. So total frequency is going to be divided into the small bands. And these is said to be a frequency division multiplexing. This on to the first stage. Now, what's happened that FDM signals is this band into the GSM system we have got in a 200 kilohertz band, and that is given to the group of the users rather than only a one user. Group of the users को allocate कर दिया जाता है over there. So initially it is was a FDM, and then that band is given to the group of user by using the TDMA, because I'm giving on the same band of frequency to the different users. So I will have to make in a mechanism to distinguish one user from the other. So then I will do an TDMA. So फिर time division multiple access की technique. So because we are going to be access the user by using a time division multiplexing process. Later on, you will see that for uplink, we give 200 kilohertz to a single user, and for the downlink, we give another 200 kilohertz. So what will happen in a 400 kilohertz band is basically provided to the user. User को provide here. For uplink and downlink, we have different frequencies there. And this is said to be FDD technology, frequency division duplexing. So that was the crux of the last lecture we already described, and we thoroughly discuss onto this technology. So FDM के अंदर we have an FDMA, the frequency slices, the frequency narrow bands has been given to the user को दे दिया जाता है. So FDM is said to be a dedicated resource. It means to be once the channel has been allocated to the user, so it will be dedicated for that user till the session end. जब तक session नहीं end होता है, and we have now some of the statistics related to the amps frequencies we have got this.
तो FDMA के फीचर्स हम पढ़ चुके थे. द इंटायर वी हैव गॉट इन अ बैंड, एक बड़ा बैंड है. And this is the total band purchased by the operator. It is divided into the small frequency bands. So to separate the two bands, दो bands को separate करने के लिए क्या करते हैं? There must be a guard band in between. So at one side of the channel there is a small band. On to the left there is a small band on to the right. So if this is said to be a total bandwidth, that total spectrum is purchased by the company. So how can you find out how many number of the users can be accommodated in that band? So the number of the user or the number of channels can be find out by using this formula. This is the total band. This is the number of the total user band which is occupied divided by the bandwidth of the single channel there. ठीक है, इसको भी हम एक्सप्लेन कर चुके थे. क्योंकि एक गार्ड बैंड इस तरफ है, एक गार्ड बैंड इस तरफ है. सो टोटल बैंड से टू गार्ड बैंड्स को आप माइनस करते हैं. सो डिवाइड बाय BC, सो इट विल गिव एन टोटल नंबर ऑफ द चैनल्स अवेलेबल इनटू दैट स्पेक्ट्रम. इस स्पेक्ट्रम के अंदर अवेलेबल होते हैं. ओके, then we start with the TDMA frame structure. TDMA stand for is a time division multiple axis technique. Every small time slot will be allocated to the users को allocate कर दिए जाते हैं. ठीक है. So whenever we strictly talk about the standard of the GSM standard की जब हम बात करते हैं, तो GSM के अंदर one frequency band means to be 200 kilohertz channel that will be allocated simultaneously to the 8 users को किया जा सकता है. And the time slot combined together of the 8 users के पूरे time slots यानी 8 time slots को combine करके it will have enough frame. तो उसको हम frame कहते हैं. If you see that this is a TDMA frame, doesn't mean to be it will always have an 8 slots. So in 8 slots, you see that we have got total of the slots and total of the n slots there, dependent upon the standards over there. But whenever, if we say that this frame is for the GSM system, then what will happen that there will be a total of the 8 slots there. तो फिर आपके यहाँ पे 8 slots होंगे, each for each user in that फ्रेम. इस फ्रेम के अंदर 8 यूजर्स होंगे और हर एक स्लॉट जो है 8 स्लॉट्स होंगे. एंड ईच स्लॉट इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेड टू गिवन टू द वन यूजर. तो एक यूजर को दिया जाएगा. एंड इट विल बी साइक्लिकली रिपीटेड. ये साइक्लिकली रिपीट होंगे. कमिंग टू ओवर देयर. सर ये स्लॉट्स 8 से ज्यादा नहीं हो सकते स्लॉट्स? नहीं, ये डिपेंड करता है ना. मैं अगर आप GSM के स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो GSM स्टैंडर्ड इज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड है. तो जब भी आप GSM के स्टैंडर्ड्स को यूज करेंगे तो फिर वो 8 यूजर को ये. तो अदरवाइज यू कैन मेक एन सो मैनी स्लॉट, जितने आप बनाना चाहें. आप कहें मैं 4 का बनाता हूँ, मेरी एप्लीकेशन 4 स्लॉट्स की है, या किसी वो TDMA सिस्टम है वो 4 के ऊपर है. अमेरिकन सिस्टम के अंदर देयर वर 3 स्लॉट्स, वहाँ पे 3 स्लॉट्स का इस्तेमाल हो रहे थे जो वो TDMA जो टेक्नोलॉजी सेकंड G के अंदर. इज इट राइट? तो ये स्लॉट्स इज डिपेंडेंट अपॉन, इट्स डिपेंड अपॉन योर डेटा रेट एज वेल. आपकी डेटा रेट पे भी डिपेंडेंट होता है. तो इतना आप पॉज भी नहीं टॉलरेट कर सकते ना. मतलब 8 स्लॉट का मतलब है कि वंस द योर इंफॉर्मेशन हैज बीन ट्रांसमिटेड इन वन स्लॉट, so the next your slot will come after a 7 slots. 7 स्लॉट के बाद फिर आपकी दोबारा वो भी आएगी. तो your information will be discontinued over there. तो आपकी डेटा रेट should be cope with that delay. उस डिले के साथ कोप होना चाहिए उसको. So it can be variable. या अगर आप सिंपल आप इन जनरल TDMA फ्रेम की बात करेंगे तो स्लॉट्स जो हैं वो आप कितने भी रख लें. So it depends upon your application. लेकिन अगर आप GSM का TDMA फ्रेम करेंगे, so that number of slot will then be, total number of slots will then be equal to 8. तो 8 के बराबर होंगे. ठीक है जी? Yes sir. तो see over here, you see that we have got this is a frame 1, frame 2, यानी कि आपके कंटिन्यूस फ्रेम्स आ जा रहे हैं. मतलब आपने भेजा एक फ्रेम गया, दूसरा फ्रेम and up to so on. The user one, let's suppose have been allocated with the
फर्स्ट टाइम स्लॉट, पहले टाइम स्लॉट के अंदर रखा हुआ है. So once the one frame transmitted, the second frame whenever it is going to be transmitted, तो फिर आपका जो फर्स्ट टाइम स्लॉट है तो वो आपको मिलेगा. So in the meanwhile, from 2 to 8 time slots, you will not be, send any data. So you will have to wait for that much of time, and then the next data, your data, the voice channel is now going to be transmitted onto the first over there. इसी तरह 2 के लिए, इसलिए 3 के लिए, 4 के लिए, and up to so on. Is it right? तो ये चीजें हैं. Then over here, if you see that this is a complete TDMA frame, जिसका information message is over here. So this is said to be the actual payload. ये आपका payload है. Payload we mean to be whatever your actual information that will be transmitted in that particular bits. In bits, यानी इस information places की. Along with this, we have got some of the redundant bits over here. कुछ redundant bits भी होते हैं TDM frame के अंदर. One is said to be preamble and the other is said to be trial bits. Trial bits that will represent the end of your complete frame. Frame का trial bit जो है वो, and after this there will be the start of the next frame. Next frame का start होता है. So this is an information over there. The frame is ended over there, and the next frame that could be started from onward to this. We have now some preamble as well. यहाँ पे कुछ preamble भी है. That preamble have got, and again is the not the part of information. वो information यानी actual information का part तो नहीं है, but it will facilitate जो redundant bits होते हैं, that is going to be facilitate the communication. Communication को facilitate कर रहे होते हैं, which is not actually the part of the information. Information का part तो नहीं होते हैं, but it will facilitate the communication. So there is a lot of the overheads over here. इनको हम overheads कहते हैं. These are said to be overheads. For instance, एक चीज मैं बता दूं कि preamble, let's suppose the user one have got an information into the information message. अब let's suppose ये total of आपके 8 slots हैं. Which slot is for some user? किसी user के लिए कौन सा slot है? तो वो यहां से पता लगेगा preamble से. Let's suppose the user one is using the slot number 1. Slot number 1 का इस्तेमाल कर रहा है. So preamble से जब को decode करेगा, it will become to know that this slot is for me. वो information उसकी preamble के अंदर पड़ी होती है. ठीक है ना? मसलन अगर इसके अंदर 8 slot हैं, और 8 स्लॉट में से अब आपका कौन सा स्लॉट है वो प्रीएम्बल से पता लगेगा. ठीक है जी. या एरर करेक्शंस कोई हैं वो प्रीएम्बल से पता लगेगा. सो प्रीएम्बल इज सेड टू बी इज अ पार्ट ऑफ that information which is not actual information, which is not actual your information, but it will facilitate the functions को facilitate करेगा. So the preamble and trail bits are said to be overhead bits हैं. ये आपके पास overhead bits हैं. ठीक है जी. So we have got this. Okay. The second thing is this. Sometime your channel is said to be time variant channel. Time variant we mean to be that channel is behaving in one way at the present time, and in the near future is going to be behaving into the differently. मसलन आपका जो चैनल का रिस्पॉन्स है वो एक जैसा नहीं है. इट्स नॉट लाइक फॉर इंस्टेंस 1 मिलीसेकंड चैनल का बिहेवियर एक जैसा था, एक तरह का था, और आफ्टर एन 1 मिलीसेकंड it will become different, so that very rapidly the behavior of the channel are going to be changed. So maslan, let's suppose in a 1 millisecond your channel behavior is changed, and the length of your frame is said to be a 3 millisecond. So means to be within that particular frame, the channel, the behavior of the channel is going to be changed 3 times. So that it will happen that ऐसा है कि आपका चैनल जो है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि उसका एटेन्युएशन इसकी एक प्रॉपर्टी है, वो एटेन्युएट करता है सिग्नल को. अब चैनल जो है वो बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है. मसलन 1 मिलीसेकंड के लिए वो चैनल का जो इंपल्स रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट है.
1 मिली सेकेंड के बाद उसकी एटेन्यूएशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, तो वो टाइम हाईली टाइम वेरिएंट चैनल हो गया। सो अगर आपकी फ्रेम का साइज 3 मिली सेकेंड है, सो व्हाट विल हैपन दैट कि 1 मिली सेकेंड को तो वो एक तरह ट्रीट कर रहा है, लेकिन सेकेंड मिली सेकेंड को डिफरेंट तरीके से ट्रीट कर रहा है, और फिर नेक्स्ट मिली सेकेंड पे डिफरेंट। तो एक ही फ्रेम के अंदर द चैनल इज वेरी रैपिडली चेंजेस देयर, सो दैट अगर आप एक चैनल का पोर्शन बहुत ज्यादा एटेन्यूएट प्रोड्यूस कर रहा है 1 मिली सेकेंड, तो आपका पूरा का पूरा फ्रेम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो जिस वक्त चैनल आपके फ्रेम के जिस हिस्से को खराब नहीं कर रहा है, तो वो भी खराब होके खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर आपका पूरा फ्रेम सही नहीं पहुंचा, सो व्हाट विल हैपन, द एंटायर इंफॉर्मेशन विल बी डिस्कार्डेड। फॉर दैट रीजन अगर ऐसी सिचुएशन होती है, सो क्या होता है कि द कंप्लीट TDMA फ्रेम के बर्ड्स बनाए जाते हैं, यानी इसकी फ्रेगमेंटेशन कर दी जाती है। इट मींस टू बी इनको टुकड़ों में डिवाइड कर दिया जाता है। सो द कंप्लीट TDMA फ्रेम इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, और हर एक चंक ऑफ दैट इंफॉर्मेशन विल बी ट्रांसमिटेड इन अ बर्स्ट। बर्स्ट कहते हैं एक बर्स्ट के अंदर एक पार्ट। मसलन इस फ्रेम को मैंने डिवाइड किया 3 हिस्सों में, और 3 हिस्सों में मैंने उसको 3 ट्रैफिक बर्स्ट मैंने बना दिए उसके। ठीक है, not only the complete frame is transmitted, but the burst of the frame is now going to be transmitted. Is it right? What would happen that अगर आपका ये complete frame transmit किया जाता और आपका time variant channel है, what will happen that कि आपका पूरा का पूरा frame let's suppose खराब हो गया, so from the transmitter it will be asked to retransmit that frame। तो आप उस फ्रेम को फिर दोबारा का इतना बड़ा फ्रेम आपको दोबारा, लेकिन अगर कोई बर्स्ट खराब होता है, what will happen, only that small burst will be then transmitted from transmitter to the receiver। Is it right? So the errors will be reduced if you are going to be transmitted into the burst, यानी छोटे burst के अंदर। it depend upon the environment। अब जिस तरह के अर्बन एरिया है, अर्बन रीजन के अंदर चूंकि हमारी बहुत डिस्टर्बेंसेस होती हैं, गाड़ियां चल रही होती हैं, एंड वी हैव गॉट हाई राइज बिल्डिंग्स देयर, व्हाट विल हैपन दैट कि आप किसी रीजन के अंदर आपके चैनल का बिहेवियर एक जैसा है, कहीं पे आप यूनिवर्सिटी के अंदर आप आते हैं तो आपका इतनी ट्रैफिक नहीं है, यू डोंट हैव ना मच नॉइसेस देयर, सो व्हाट हैपन कि बिट एरर रेट आपका इतना ज्यादा। लेकिन आप जो सिटीज के अंदर चले जाते हैं, सो देयर इज अ वेरी different kind of your environment is there, so it means to be this is a invariant channel over there, so we have a time variant channels over there। so urban areas के अंदर that would be more good that we have gotten a smaller bursts of that TDMA frame। so bursts के बारे में, bursts किसे कहते हैं कि आप TDMA frame को small chunks में डिवाइड करें और उसको burst की शक्ल में, जिस तरह की क्लाशनकोफ की burst होती हैं, whenever you fire, so all the bullets will be fired there, so 30 की 30 bullets are fired, या आपके छोटे burst हो 10 bullets के आपने burst मारा, so this is like this, so you are going to be transmitting in the form of the burst rather than a complete frame there। तो उसका फायदा ये हो जाएगा कि छोटे burst को आप retransmit भी करें, so the efficiency of the system will not going to be deteriorate, so we use small bursts। तो we have got the one is said to be traffic bursts यानी कि जो आपकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करें। फिर आपने रेफरेंस बर्स्ट क्या होते हैं, मसलन आपने इसको टुकड़ों में तकसीम किया, 3 टुकड़ों में तकसीम किया, देन यू विल हैव टू append some more overheads there, फिर आपको कुछ और overheads भी लगाने। एक तो ये overheads हो गए preamble, tributes, and we have got these and whenever you are going to be converted into the traffic, तो burst के अंदर आपने इसको जब भेजना है तो what happened, ये जो अपना burst है इसे said to be a traffic burst, इसको हम ट्रैफिक बर्स्ट कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये बर्स्ट का सीक्वेंस नंबर क्या है, मसलन फर्स्ट इसमें कौन सा है, सेकंड कौन सा है और थर्ड कौन सा है। अगर आपकी पैकेट स्विचिंग की कम्युनिकेशन हो रही है तो फिर तो आपको इसको और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। then what will happen that you will have to number each of the burst का, this is a burst number 1, this is a burst number 2, so you will have to append some more overheads into the information के अंदर आपको
और जो है redundant bits को ऐड करना पड़ेंगे, which is said to be overhead. So digital system will have ना much more overheads. उसके अंदर बहुत overheads मौजूद होते हैं. So traffic bus and the other is said to be reference bus. जैसे कि इसकी reference bus की एक और information, whenever you transmit the chunk of information from transmitter to the receiver, जब receiver पे receive होता है तो receiver एक acknowledgement का packet भेजता है, yes this particular sequence number bus has been received to me. तो ये जो acknowledgement packet है is said to be a reference bus. ये आपका reference bus होता है. जिस तरह कि आप खत लिखते हैं और खत आपका रिसीव होता है कहीं पे और आप उधर जाके उनको बताते हैं, या रिसीवर जिसने रिसीव किया होता है वो आपको फोन करके बताता है कि यस योर लेटर हैज बीन रिसीव्ड टू मी. सो वो एक एडिशनल किस्म की इंफॉर्मेशन. सो जब बस मिल गया, सो फॉर रिलायबिलिटी व्हाट्स हैपन, the receiver will inform the sender that yes your this number sequence has been received. इसका बर्स हमें रिसीव्ड हो गया है. And so this is said to be a reference bus. उसके reference bus कहा जाता है. Okay, not only had this, if we are going to see an individual time slot, अगर मैं time slot के अंदर देखना चाहूँ तो अंदर भी हमें actual information सिर्फ नहीं है, but we have got a lot of the other redundant informations over there, which is said to be the overhead. So slot के अंदर, that is, let's suppose this particular slot is allocated to some user, तो उसकी इंफॉर्मेशन डेटा के अंदर पड़ी हुई है. दिस इज सेड टू बी पेलोड. इसका पेलोड यहाँ पे पड़ा हुआ है. लेकिन कुछ एडिशनल बिट्स और भी पड़ी हुई हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन ओवर हियर, व्हिच इज नॉट पार्ट ऑफ दैट वॉइस चैनल, बट इट विल फैसिलिटेट अगेन द कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करेगा. चाइल्ड बिट यानी स्टार्ट ऑफ योर स्लॉट, and guard bit means to be you are going to be ended over there. तो आपका जो information है वो यहाँ पे end हो गया, and the next slot will be appear over here. So information, the voice channel information is basically placed in that particular region. इस particular bits के अंदर पड़े होते हैं. We have now some other bits is said to be synchronization. If your clock is, आपकी जो मोबाइल की clock है वो synchronize नहीं है system के साथ, so that will be provided over there that you should synchronize your clock. अपनी clock को synchronize करें, क्योंकि ये तो आपने हर एक slots को अपनी time के अंदर, time के लिहाज से आपने, अगर आपकी घड़ी और मेरी घड़ी एक जैसी synchronize नहीं है तो हो सकता है कि मैं इसकी जगह इस time slot पे, इस time slot के ऊपर मैं जो है वो receive कर लूँ. So you must have to be synchronized with the system के साथ आपको synchronize. So that could be represented over here for 0 or 1. Once you have to synchronize, अगर आपको synchronize करनी है clock को, then what will happen that the synchronization channel will be used for this. So for the clock it is used for the clock synchronization. तो ये जरा सा टॉपिक आपकी नेटवर्किंग की तरफ जाता है, तो आप सिर्फ इसको ये समझें कि this is a one of the overhead bit that has been used over there that will synchronize your clock with the system के साथ synchronize करने के लिए इस्तेमाल होगा. So this is all about the TDMA frame structure. ठीक है, ये TDMA जरा सा इसको इस point of view से भी देख लें. So this is the TDMA feature है. All user use same frequency. मसलन ये अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो अगर पहले कोई नहीं समझा, यहाँ पे यूजर 1 है, यहाँ पे यूजर 2 है, यहाँ यूजर 3 है. लेट्स सपोज टोटल 8 यूजर्स हैं for the GSM systems is there. All the 8 users are using the same frequency band. Bear in mind, same frequency band. 200 kilohertz used over there, the same 200 kilohertz will be used by this user. The same 2 kilohertz will be used by this user and up to so on. Total 8 users इस्तेमाल कर रहे हैं इसको. Is it right? So that all the users using the same frequency band, यानी 200 kilohertz का बैंड वो इस्तेमाल कर रहे हैं. वो ये है F1 से लेके F1 prime तक. Let's suppose it is started from 1000 megahertz and that will be a 1000 megahertz है. So 1000 megahertz plus 200 kilohertz. So this is the upper limit of that frequency.
सो ये वाली फ्रीक्वेंसी ये वाला भी यूजर इस्तेमाल कर रहा है सेम, बट डेज आर नॉट मिक्स विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे, बिकॉज दिस इज अ सेपरेट स्लॉट, दिस इज अ सेपरेट स्लॉट, दिस इज अ सेपरेट स्लॉट, एंड एवरी यूजर नोज दैट विच वन इज माय स्लॉट, मेरा स्लॉट कौन सा है. नाउ नोटिस दैट इफ यूजर वन इज ओवर हियर, तो बाकी के 8 स्लॉट तो उसके लिए कोई काम के नहीं है फॉर यूजर वन. इन स्लॉट्स के अंदर तो कोई और यूजर्स मौजूद होंगे, सो ही विल रिमेन आइडल फॉर दैट पीरियड. इस पीरियड के लिए ये आइडल है. इट्स नेक्स्ट वॉइस विल बी रिसीव इनटू द फर्स्ट टाइम स्लॉट इनटू द नेक्स्ट फ्रेम के अंदर रिसीव हो जाएगा. सो इट विल बी देयर, and cyclically it will be repeated again and again and again. So the first time slot, it will collect the information in each frame from the first time slot and will be remain stick with the first time slot. It will nothing to do with the other time slot. और time slots के साथ इसी तरह और यूजर के अंदर भी है. अब जब ये इतने टाइम स्लॉट के लिए खाली रहता है, तो इस वक्त अगर इसको हैंड ओवर प्रोसेस करना है तो इट कैन डू. जैसे मैंने कहा कि माहू के अंदर व्हाट इज माहू. माहू स्टैंड फॉर एनीबॉडी. माहू, खयाम, खयाम, हमजा. मोबाइल एसेटेड हैंडओवर प्रोसेस. मोबाइल असिस्टेड हैंडओवर प्रोसेस. व्हाट डज इट मीन टू बी? सर मतलब सर इसमें जो सीडीएमए टेक्नोलॉजी यूज होती है, सॉफ्ट हैंडओवर जो होते हैं सर. नहीं यार, माहू के बारे में बताओ. माहू इज यूज इनटू द हार्ड हैंडओवर के अंदर यूज होता है ना, एंड इट वाज इनटू द जीएसएम टेक्नोलॉजी के अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया था. योर मोबाइल इज स्मार्ट इनफ that it can automatically and seamlessly connect it to the next base station whenever it come in contact or in contact with the next base station. What will happen that the new pair of the voice channel will be allocated to the user. User को नया pair of allocation होती है. So that process, the handover process, will be initiated by the mobile itself. न कि मैं BSC नहीं start करता, वो mobile itself. So it is said to be a Mahu, mobile assisted है. So a lot of the burden has been reduced onto the MSC. MSC के ऊपर एक burden को reduce करने के लिए हमने Mahu की explanation की थी. Is it right? You must conceptually know this. Is it right? Okay. Now थोड़ा सा मैं इसको ये जो बातें की हैं, we can explain it into this. देखें, every particular point in that slide has been explained. और उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. मसलन शेयर TDMA फीचर क्या है? It will share a single carrier frequency with several users. तो आप जब आपको GSM का पूछ लिया जाए, so it's a single carrier frequency that will be shared among 8 users. ठीक है, specifically. The number of time slots per frame depend upon the modulation technique, अवेलेबल बैंडविड्थ एंड एक्सेट्रा. जैसे मैंने कहा कि आपके ऊपर बैंडविड्थ पे डिपेंड है या डेटा रेट पे डिपेंड है, इवन आप मॉड्यूलेशन स्कीम के ऊपर भी डिपेंडेंट है. व्हाई इट इज डिपेंडेंट अपॉन. अब देखें, इसके अंदर यू मस्ट नो द कंसेप्चुअली व्हाट डू यू मीन बाय मॉड्यूलेशन टेक्निक. मसलन मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया इन अ पेपर, व्हाट्स हैपन कि आपके पास 2 किस्म के मॉड्यूलेशंस की है. वन इज साइड टू बी बीपीएस के, द अदर इज साइड टू बी अ क्यूपीएस के. इज इट राइट? सो eventually you come to know that which particular is more faster. One symbol is transmitting 2 bits in QPSK is better than the BPSK because it is going to be transmitting a 1 bit in a one symbol. एक सिंबल के अंदर एक ही बिट को ट्रांसमिट कर रहा है. तो अगर आपकी इंफॉर्मेशन इतनी तेजी से जा रही है तो आप टाइम स्लॉट्स को बढ़ा भी सकते हैं ना, क्योंकि आपको मसलन एक सिस्टम के अंदर दिस इज द टोटल 8 टाइम स्लॉट्स हैं, 8 टाइम स्लॉट्स. तो यहाँ पे आपने योर रिक्वायरमेंट इज दैट यू कैन ट्रांसमिट बीपीएस के स्कीम के अंदर 1 बिट यहाँ पे आप ट्रांसमिट कर रहे हैं, 1 बिट. तो 1 बिट विल बिकम आफ्टर एंड 7 टाइम स्लॉट के बाद दोबारा 1 बिट आएगी. लेकिन अगर आपके बीपीएस के
तो फिर 2 बिट यहाँ पे आ गई, सो इट विल देन वेट 7 टाइम स्लॉट एंड नेक्स्ट 2 बिट्स विल बिकम ओवर हियर। तो इसका मतलब है कि आप 8 की जगह, आप 7 की जगह 14 टाइम स्लॉट्स का इंतजार कर सकते हैं, या 16 टाइम स्लॉट का इससे इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि अब तो आप पहले 1 बिट भेज रहे थे, अब आप 2 बिट्स भेज रहे हैं। सो योर फ्रेम कैन बी एक्सटेंड हो जाएगा, एग्जैक्टली डबल्ड, आपका डबल्ड हो जाएगा। सो द फ्रेम इज डिपेंडेंट अपॉन द लेंथ ऑफ द फ्रेम इज आल्सो डिपेंडेंट अपॉन योर मॉड्यूलेशन स्कीम के ऊपर, एंड द स्पीड, डेटा रेट के ऊपर, एंड द बैंडविड्थ एंड डेटा रेट वन एंड द सेम थिंग। सो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द मॉड्यूलेशन टेक्निक। आपको इन बातों को समझ होनी चाहिए। Because of discontinuous transmission in TDMA के अंदर, discontinuous the handover process is much simpler, जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आइडल पीरियड के अंदर मोबाइल हैव एन एबिलिटी दैट इट कैन लिसन द बेस स्टेशंस के। अब आपके पास कौन सा करीब बेस स्टेशन आ गया और फिर वो डिसाइड कर सकता है कि वेदर आई शुड इनिशिएट द हैंडओवर प्रोसेस और नॉट। ठीक है, ये भी अभी मैंने आपसे बताया। व्हाई इट इज सेड टू बी अ डिसकंटिन्यूअस ट्रांसमिशन। सुमैया मौजूद है कि नहीं? सुमैया कोई बात नहीं करती। जी एनीबॉडी बताएं जी, सुमैया मौजूद है? सर मौजूद है जी, लेकिन मेरे ख्याल से मोबाइल छोड़ के सर चली गई है। हाँ, वो बस वो मोबाइल छोड़ के चली जाती जब मैं कॉल करता हूँ, तो फिर उसको लैला बताए जी। बेटा नाइला, लैला नाम है कि नाइला है, आई डोंट नो। लैला लैला है जी, लैला प्रेजेंट लैला है जी, है सर। लैला बताए जी। वो भी मोबाइल छोड़ के चली गई है? जी सर, शायद। अच्छा अच्छा, बस लोग ऑनलाइन हो जाते हैं, बाकी गायब हो जाते हैं। हाँ? सर बस अच्छा, पता नहीं। ठीक है जी। What do you mean by discontinuous, खयाम? डिवाइड खयाम खयाम भी चला गया। हेलो हेलो ठीक है जी, discontinued transmission will mean to be divide time into slots, divide slots into time. what's happened ki, if a user one is transmitting in that slot, it will be remain idle, so it will be discontinued for a 7 time slots then, and then it will be allocated into the next frame. So this is a discontinuous transmission. You have a discontinuous transmission. Possibility for a bandwidth on demand. There is a possibility for bandwidth. So we have gotten a more liberty in this. We can allocate more than one slot to the single user. For instance, एक यूजर जो है वो कहता है कि मेरा डेटा रेट 1 MB है, मेरा 1 MB रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, then he can demand the operator that there should be allocation of 2 time slots rather than a 1 time slot to a single user. वो कहता है कि जी एक की जगह मुझे 2 टाइम स्लॉट दिए जाएं ताकि मेरा डेटा रेट डबल हो जाए. So the two time slot will be allocated to the same user. So you on demand can extend your data rate. अपने डेटा रेट को आप एक्सटेंड कर सकते हैं. ठीक है, मतलब let's suppose every user, there are 4 users and every user want in a 2 time slot rather than a 1 time slot. वो क्या करते हैं कि 2 इसको एक यूजर को दे देते हैं 3 और 4, दूसरे यूजर को 5 and 6, तीसरे यूजर को 7 and 8 to the next user. So all the 4 users has been given a 2 time slots so that their data rate will become double there. तो वो doubled हो जाता है. ठीक है, so this could be on demand. The possibility for the bandwidth is on demand. On demand we can give it over there. This is a less sensitive to fading than FDMA. ये भी मैं last time शायद explain किया है. If you see over here, less sensitive because in amps के अंदर we have got even a narrow band as compared to the GSM system. GSM amps के अंदर we have a 30 kilohertz का bandwidth इस्तेमाल होती थी, and into the GSM system we use to have a total of a 200 kilohertz का band. So bandwidth is much more as compared to the amp system.
हेलो सर, हेलो, तो था अस्सलाम वालेकुम जी। सर। अभी तक सर जो आपने जो भी कहा सर, मैंने वो आवाज़ ही नहीं रहती आपकी सर, लेक्चर की मुझे समझ भी नहीं है। हेलो, अच्छा, फिर आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। कौन बोल रहे हैं? क़याम सर, क़याम। खयाम, फिर आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है सर। Okay, so if you see that if some of the fading comes on into the band, so what will happen? Some of the frequency will be lost there. कुछ frequencies lost हो जाएंगी, but we have a very, let's suppose 50% 50% of the information is lost there. ठीक है, तो आगे बाद थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि that may not be corrected, जो कि correct नहीं की जा सकती. What's happened? It is more sensitive to the fading effect. Fading effect से ज़्यादा sensitive है. But you see that in GSM 200 kilohertz का band है, what would happen? The same fading effect is over here, but you see that we have got the 70-80% of the information intact is over here. So whenever it is an intact, it may, जो थोड़ी सी लॉस हुई है, that may be corrected by using error correction code से, शायद हम कोई block code से हम इसको correct कर सकते हैं. So a lot of the information will be remain intact over here, so you can recover that information there. तो जब ये आप इंफॉर्मेशन रिकवर करते हैं, so it is said to be less sensitive. The larger bandwidth is less sensitive to the fading effect से less sensitive हो गया. You see that this is less sensitive to the fading effect than NTA. You see that every particular point in that slide and into the previous slides as well, in all slides in this presentation, you see that every particular point have got its theory and concept. ठीक है, it can be asked by using any point कि आप इसको एक्सप्लोर करें. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहा जाए कि पॉसिबिलिटीज फॉर द बैंडविड्थ ऑन डिमांड शुड एक्सप्लोर, सो यू जस्ट हैव टू मेक एन डिटेल्स ऑन दिस. इसके ऊपर डिटेल काफ़ी लिखी जा सकती है. You just know the conceptual meaning of this. Okay, come to the efficiency. What is the efficiency of the frame? Frame की क्या efficiency है? And we get some. First of all, you must know that what are the overheads, the overall overheads into the system. System के अंदर या frame के अंदर कितने overheads मौजूद हैं? तो पहले तो मैंने आपको कहा, if you come, this is said to be number of the overheads, number of bits, overhead bits, number of overhead bits we are going to be calculating over here. सबसे पहले मैंने आपको कहा कि that frame that would be transmitted in the form of the burst. Burst के तौर पे दो किस्म के bursts आपको बताएं. One is said to be reference burst and the other is said to be the traffic burst. Traffic burst or reference burst. Now you see that the first term is said to be NRBR. Now you see what is BR. BR is said to be number of overhead bits per reference burst. Reference burst के अंदर P overheads होते हैं, तो वो कितने हैं? So reference burst तो सारा ही overhead होता है ना. आपको जो ट्रैफिक बर्स्ट होता है उसके अंदर आपके कुछ ओवरहेड्स होंगे, कुछ उसकी अपनी पे लोड्स होंगी, अपनी इंफॉर्मेशन होगी. लेकिन रेफरेंस बर्स्ट तो चूंकि फैसिलिटेट करने के लिए, उन ट्रैफिक बर्स्ट को फैसिलिटेट करने के लिए इस्तेमाल हुए हैं, सो ऑल द बिट्स इनटू द रेफरेंस बर्स्ट आर सेड टू बी ओवरहेड बिट्स हैं. सो दिस इज एंड आर नंबर ऑफ द रेफरेंस बर्स्ट. आपके पास अगर 3 रेफरेंस बर्स्ट हैं और एक रेफरेंस बर्स्ट में जितने बिट्स हैं मल्टीप्लाई कर लें, सो टोटल नंबर ऑफ द ओवरहेड बिट्स इनटू द रेफरेंस बिट्स, रेफरेंस बर्स्ट. इस बात को आप समझ रहे हैं ना जी? Then we have that the second term is over here is BP. BP stands for number of overhead bits per preamble in each slot. ठीक है, अब हम चूंकि ट्रांसमिशन ट्रैफिक बर्स्ट की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रैफिक बर्स्ट की बात कर रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ ओवरहेड बिट्स पर प्रीएम्बल, यानी प्रीएम्बल के अंदर, प्रीएम्बल इज आल्सो सेड टू बी ओवरहेड. तो अगर आपका जितने भी रेफरेंस आपके ट्रैफिक बर्स्ट होंगे, जितने भी आपके ट्रैफिक बर्स्ट होंगे, तो उसके अंदर प्रीएम्बल होगा. एंड दैट प्रीएम्बल, नंबर ऑफ ओवरहेड बिट्स इन प्रीएम्बल in each slot, जितने हर slot के अंदर preamble होता है. So what's happened? All the bits are there, so it will be multiplied by total number of the traffic bursts. So this is the one of the other kind of the overheads here. अब तीसरा कौन सा overhead है? कुछ guard bits हैं, guard bits यानी कि trail bits और guard bits हैं.
तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बिट्स ईच गार्ड टाइम के अंदर जितने भी आपके बिट्स हैं, यानी कुछ टाइम आपको गार्ड भी करना पड़ेगा ना, ताकि एक स्विचिंग मैकेनिज्म से दूसरे स्विचिंग मैकेनिज्म के ऊपर जाने के लिए यू मस्ट हैव टू बी गार्ड फ्रॉम इट. सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बिट्स ईच गार्ड टाइम, यानी गार्ड बिट्स आपके मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ द ट्रैफिक बर्ड्स, अगेन क्योंकि ट्रैफिक बर्ड्स के दरमियान में होता है तो वो इसी तरह गार्ड बिट आपके रेफरेंस बर्ड्स के दरमियान में भी होंगे. सो दैट विल बी multiplied over. So this is said to be total number of overhead bits that will be included into a one TDMA frame. एक फ्रेम के अंदर इतने overheads होंगे. What will be the total user bits? User bits कितने होंगे फिर? जितना भी फ्रेम के अंदर बिट्स हैं, उससे अगर आप ये ओवरहेड बिट्स को माइनस कर दें तो दैट विल बी अ टोटल यूजर बिट, टोटल नंबर ऑफ यूजर बिट्स हो गए. एंड दैट इज सेड टू बी द एक्चुअल इंफॉर्मेशन. तो यूजर बिट्स हैं, ये तो सारे आपकी फैसिलिटेशंस के लिए, कम्युनिकेशन की फैसिलिटेशंस के लिए इस्तेमाल किए गए हैं. सो ओवरहेड बिट्स आर सेड टू बी आर रिडंडेंट बिट्स के तौर पे. तो यूजर बिट्स जो हैं, इफ यू सी दैट एफिशिएंसी क्या होगी, total number of the user bits divided by the total bandwidth, total traffic bits, जितने total traffic bits हैं. So user bit कितना है, total bits से overhead bits को minus कर दें तो आपका वो user के सारे bits आ जाते हैं, divided by the total bits in the frame. तो अगर मैं इसको ये करूं तो दैट विल बी 1 माइनस बी ओ एच डिवाइड बाई बी टी. अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करूं सो दिस इज सेड टू बी परसेंटेज इफिशिएंसी. इसको हम परसेंटेज इफिशिएंसी कहते हैं. ठीक है. यू कैन फाइंड आउट द टोटल बिट्स इन द फ्रेम के अंदर कितने टोटल बिट्स हैं. तो आप टोटल सर इसकी समझ नहीं आई सर. अच्छा ठीक है. अब आप ये देखें, ये फ्रेम इसके अंदर इफ यू हैव गॉट टोटल ऑफ द 100 बिट्स हैं, आउट ऑफ दैट 100 बिट्स 10 बिट्स इज यूज्ड फॉर प्रीएम्बल, 10 बिट्स आर यूज्ड फॉर ट्राई बिट्स. तो कितने बिट्स हो गए, 20 बिट्स. ओवरहेड बिट्स कितने हो गए, 10 फॉर दिस, 10 फॉर दिस, टोटल 20. आउट ऑफ 100 20 बिट्स आर द ओवरहेड बिट्स. तो 100 में से 20 को माइनस कर लें, सो दैट बिट्स विल बी यूजर बिट्स हो गए, जो यूजर इस्तेमाल करे, जो यूजर अपनी इंफॉर्मेशन यूज करे. तो उधर भी मैंने यही किया, टोटल बिट्स थे 100, उसमें से 20 को माइनस किया तो 80 आ गया. तो टोटल कितने थे, 100. तो 80 आउट ऑफ 100 यानी 80% इफिशिएंसी है सिस्टम की. Do you understand? Yes sir. बिल्कुल सर. ठीक है. Yes sir. Yes. Out of 100, the 80 bits are used for the users. बाकी तो overhead थे, is a redundant bit. So efficiency of the system क्या हुई, multiply by 100 कहते हैं. जैसे ही overhead bit अगर आपके ज्यादा हो गए, यानी 20 से आपके 70 हो गए, 20 से 30 हो गए, then what will happen that the efficiency will be dropped to the 70 because आप ज्यादा redundant information को transmit कर रहे हैं, अपनी information को कम transmit कर रहे हैं. Is it right? So that the percentage of the frame efficiency की percentage you can find out by using this formula. इस formula से आप find out कर सकते हैं. I hope कि अब आपको understand हो गया होगा इस चीज. So if you are required to find out the total number of bits in a complete frame, एक frame के अंदर कितने bits हैं आपके पास, और आपको अगर duration of the frame दे दिया जाए, यानी कि आप कहें कि यार 1000 मिलीसेकंड का फ्रेम है पूरा फ्रेम, तो ड्यूरेशन आपको पता है, TF is said to be duration of a complete frame. That will be in second के अंदर है. दूसरा is said to be data rate यानी बिट्स पर सेकंड ट्रांसमिट हो रहे हैं, यानी कितने बिट्स पर सेकंड ट्रांसमिट हो रहे हैं. इफ यू आर गोइंग टू बी मल्टीप्लाइंग दिस, so that will second and second will be cancelled, so the number of bits will be you can find out the number of bits by using this formula. से आप एक फ्रेम के अंदर कितने बिट्स हैं you can find out by using this formula, इस formula से. Do you understand this? कोई प्रॉब्लम है तो बताएं इसके अंदर.
So it is going to be represented over here is said to be total number of information per bit frame will then be equal to TF divided by R is the frame duration and channel bit rate of your cells. So then we will have enough information there. So this is all about the TDMA technology and the GSM के अंदर जो TDMA का इस्तेमाल किया गया है. Now we are going to explore some of the code division multiple access techniques. CDMA की तरफ चलते हैं. And this is also said to be a spread spectrum. Spread spectrum भी कहलाता है. Spread, why it is said to be a spread spectrum और CDMA spread spectrum multiple access technique जिसे हम CDMA कहते हैं. So we'll come to know that what does it mean to be. So it's a very important part in this study. Examine that. Maslan, if you are going to be transmitting a GSM signal, तो GSM की bandwidth कितनी होती है जी? 200 किलोहर्ट्ज. 200 kilohertz. 200 किलोहर्ट्ज, ठीक हो गया जी. तो यहां से लेकर यहां तक ये ब्लैक वाला आप सिग्नल देखें इज सेड टू बी अ सिंक फंक्शन इनटू द फ्रीक्वेंसी डोमेन. ये सिंक कब आएगा? व्हाई व्हेन दैट सिंक विल कम? फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर सिंक कब बनता है? तो टाइम डोमेन का इसका इक्विवेलेंट क्या होगा जी? एनीबॉडी? यार आप लोगों ने इतने सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, ख़ुसूसन आप कम्युनिकेशन सिस्टम, मुझे लगता है कि आप लोगों ने बिल्कुल सही नहीं पढ़ा जी. सिंक फंक्शन कब आता है जी? व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट ऑफ इट्स टाइम डोमेन फंक्शन? नोबडी नोज अबाउट दिस? सर टाइम डोमेन में स्क्वायर टाइप सिग्नल है. स्क्वायर टाइप सिग्नल है, ठीक है. तो टाइम डोमेन के अंदर रेक्ट फंक्शन है. रेक्ट इज अ रेक्टेंगुलर फंक्शन, इज इट राइट? So whenever you transform it into the frequency domain, so it will be a sinc function. ठीक है. अब ये आपको ये समझ होनी चाहिए कि अगर रेक्ट की ड्यूरेशन बड़ी है, यानी रेक्ट टाइम डोमेन के अंदर है तो उसकी ड्यूरेशन बड़ी है, तो बैंडविड्थ में क्या होगा? बैंडविड्थ में उसकी जो बैंडविड्थ होगी वो कम होगी. लेकिन अगर मैं रेक्ट फंक्शन को टाइम के अंदर कंप्रेस कर दूं, व्हाट विल हैपन कि फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर उसका क्या होगा? वो उसके जो विड्थ है फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर वो बढ़ जाएगी, बिकॉज द टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. इफ यू आर गोइंग टू बी इंक्रीजिंग टाइम, व्हाट विल हैपन दैट द फ्रीक्वेंसी डोमेन में श्रिंक होता रहेगा. Whenever you are going to be shrink into the time domain, what will happen that into the frequency domain it will be expanded. Are you understanding this? So ये बड़ी important logic है. You must, everyone should understand this. तो you see that कि इसका जो रेक्ट फंक्शन होगा वो ज्यादा expanded होगा, और इसका जो रेक्ट फंक्शन होगा, जो रेड वाली की जो फ्रीक्वेंसी डोमेन स्ट्रक्चर है, तो उसका रेक्ट फंक्शन जो है वो थोड़ा टाइम के अंदर कंप्रेस्ड होगा. इज इट राइट? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यू मस्ट हैव टू बी अंडरस्टूड. मैंने जो व्हेनेवर वी स्टार्टेड द एक्सेस टेक्निक, सो FDMA यानी एक एक्सेस मैंने फ्रीक्वेंसी का रखा है, एक टाइम का रखा है, द अदर इज सेड टू बी स्पेस. तो वी आर गोइंग टू बी एक्सप्लेनिंग दैट स्पेस. उस स्पेस को फिर हमने कोड से रिलेट किया था. फिर मैंने 3 डायमेंशंस की बात की थी. फिर मैंने सिग्नल्स के हवाले से बताया था कि सिग्नल्स के अंदर देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ 3 डायमेंशन, बट वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ द डायमेंशंस इज देयर. तो हमने उसको स्पेस के साथ ही रिलेट करके पढ़ लिया था. नाउ ओवर हियर मैं जो बात करता रहा हूँ कि कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के अंदर हम कोड्स का इस्तेमाल करते हैं. कोड्स जरा देख लेते हैं कि कोड्स जब तक ऑर्थोगोनल होते हैं तो सिग्नल्स कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन अनदर. ये बताया था. यानी स्पेस के अंदर अगर आपको x, y और z ऑर्थोगोनल वेक्टर्स आपको मिलते हैं, ऑर्थोगोनल, तो आप किसी भी वेक्टर को स्पेस के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है? यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस. ठीक है?
नाउ कोड्स के अंदर भी ऑर्थोगोनैलिटी ऑर्थोगोनैलिटी कैपेबिलिटी होनी चाहिए. The codes must be orthogonal to one another. Then you can distinguish your अपनी इंफॉर्मेशन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहले भी एक मिसाल दी थी कि अगर कोई गारमेंट्स की कंपनी है या कोई दुकान है, उसके अंदर सारी ब्लू शर्ट्स पड़ी हैं जिनके साइजेस भी एक हैं, जिनके कलर्स भी एक हैं, जिनके सारी चीज़ें एक जैसी हैं, टैग्स भी एक जैसे लगे हुए हैं. हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश अ वन शर्ट फ्रॉम द अदर? एक दूसरे से आप कैसे इसको पहचान सकेंगे? जी, आप ऐसा करेंगे कि उसके ऊपर एक टैग लगा देंगे, दिस इज अ शर्ट नंबर 1, दिस इज अ शर्ट नंबर 2, दिस इज, तो हर एक के ऊपर टैग लग जाएगा. सो इट विल बी अ डिस्टिंग्विशेबल शर्ट फ्रॉम वन अनदर. सो व्हेनेवर यू हैव गॉट ए लॉट ऑफ द सिग्नल्स, तो आप कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? यू विल हैव टू टैग द ईच सिग्नल. हर एक सिग्नल को टैग करेंगे किसी कोड के साथ, लेकिन ये उसी वक्त डिस्टिंग्विशेबल होगा दैट वन कोड is orthogonal to all the other code. दूसरे सारे कोड्स के साथ वो orthogonal होगा. And the question is, what do you mean by the orthogonality? यानी कि whenever that code is multiplied by itself, अगर वो खुद के साथ multiply हो तो वो आपको 1 दे. And whenever it is multiplied with the other code, दूसरे के कोड के साथ multiply हो तो वो आपको 0 दे. सो दिस इज सेड टू बी अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द ऑर्थोगोनैलिटी. ये ऑर्थोगोनैलिटी की बेसिक प्रिंसिपल है. सारे समझ गए इसको जी? एक कोड जब खुद से मल्टीप्लाई हो तो वो 1 दे, और वो अगर दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो तो इट विल गिव यू अ 0. सो दिस इज सेड टू बी ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल. ये ऑर्थोगोनैलिटी प्रिंसिपल. हाउ इट इज गोइंग टू बी? लेट्स सपोज वी डिस्क्राइब इट बाय यूजिंग two different codes के साथ मैं इसको डिस्क्राइब करने जा रहा हूं. You just have to see over here. Now you see, C1 is a code. For the time being, you just ignore the red element. Red जो लिखाई है, returns है, इसको आप ignore कर लें. The C is said to be a vector of a code, and it is said to be 1, -1, 1, and -1. Is the 4 elements हैं in मैट्रिक्स के अंदर 4 एलिमेंट्स. इसी तरह दूसरा कोड है जो कि -1, -1, 1 और 1 है. ठीक है. आई एम गोइंग टू बी मल्टीप्लाइंग दीज 2 कोड्स. इन 2 कोड को मल्टीप्लाई करना जा रहा हूं. तो आई एम गोइंग टू बी मल्टीप्लाई, यानी ये रेड वाले को अभी आप फिलहाल ना कंसिडर करें. सो 1, -1, 1 and 1, and transpose of the वेक्टर C2 के वेक्टर का ट्रांसपोज लिया. सो इट सेड टू बी -1, -1, 1, 1. ठीक है ना? ट्रांसपोज इसलिए लिया कि मल्टीप्लिकेशन तो ओनली पॉसिबल है whenever you have now horizontal and vertical matrix हो, so it will be multiply of the same order. तो वो फिर मल्टीप्लाई हो सकेगी, अदरवाइज नहीं मल्टीप्लाई नहीं हो सकेगी. So I took an transpose of this. तो 1 multiplied by -1 will give you -1. -1 multiplied by -1 will give you +1. 1 multiplied by 1 will give you 1. So all are going, if 2 matrices are multiplied, it will give you 0. इसका मतलब है कि कोड 1 को जब कोड 2 से मल्टीप्लाई किया गया तो हमें 0 मिला. ठीक है. इसी तरह कोड 1 को अपने साथ ही मल्टीप्लाई करूं तो क्या मुझे मिलेगा? तो 1 multiplied by 1 will give you 1 + 1 + 1 + 1. So I will have an 4 here. यहाँ में 4 मिला, लेकिन ये होना तो 1 चाहिए यहाँ पे. तो फिर मैंने क्या किया कि चूंकि एक तो कंडीशन फुलफिल हो रही थी लेकिन दूसरी कंडीशन नॉर्मलाइज नहीं हो रही. दीज आर नॉट नॉर्मलाइज कोड. नॉर्मलाइज टू 1, हम कहते हैं कि ये नॉर्मलाइज हो 1 पे, 4 ना हो बस पे 4 के 1. तो 4, तो फिर हमने क्या किया कि C1 के साथ 1 आवर लेंथ ऑफ द कोड के अंडर रूट से डिवाइड कर दिया. व्हाट इज द लेंथ ऑफ दैट कोड? इज 4. तो n is 4 is here, so 1 over 4 under root is equal to 1 over 2. तो 1 over 4 under root and 1 over 4. अब कोड्स को मैंने मल्टीप्लाई नॉर्मलाइज करने के लिए ये ऑपरेशन किया. तो 1 over 4 under root तो 1 over 2 अंदर मल्टीप्लाई हो. So 1 over 2 minus 1 over 2, 1 over 2 minus 1 over 2. So over here, so -1 over 4 plus 1 over 4 plus 1 over 4 minus 1 over 4 give you 0.
and then whenever this is multiplied, so 1 divided by 4 plus 1 divided by 4, and it will give 4 divided by 4 will give you equal to. So it's now become orthonormal code. This is said to be orthonormal code. Normalized भी हो गए, normalized to 1, और ये orthogonal भी हो गए. So it's said to be orthonormal codes आपके बन गए. Is it right? Now you see that these codes are orthogonal to 1. इसके अलावा आप और codes भी बना सकते हैं जो इनके साथ orthogonal होंगे. Any question regarding this till now? बस समझ आ गई इसकी. ठीक हो गया जी. Very good. Now you see that कि we transmit our information in the form of the symbols. Symbols बना के भेजते हैं, symbols. ठीक है. The duration of the symbol का जो duration है, आपको पता होना चाहिए कि what do you mean difference between the symbol rate and a bit rate. मैंने question भी पूछा था आपसे. The symbol, one symbol can carry a 1 bit or one symbol may carry more than 1 bit. एक bit से ज्यादा को भी carry कर सकता है. So this is said to be symbol. और bit rate के अंदर एक bit के अंदर एक ही bit होता है बस. So this is the difference between the symbol rate and the bit rate. Over here you see that there is now some symbol of information. ये एक information का chunk है, symbol है, which is going to be transmitted. The duration of that symbol is said to be TS. ये TS है. ये वो actual information है, ये वो actual shirt है जिसके ऊपर मैंने tag लगाना है. ये वो shirt है जिसके ऊपर मैंने tag लगाना है. ठीक है? Number लगाना है. So you just can be considered this as a shirt which we are going to make a tag over there. उसके ऊपर tag लगाएंगे. Tag कैसे लगाएंगे? We will see that. Okay, that this is the duration of the symbol. If this is the duration, what will be the bit rate of symbol rate of that symbol? So this is simply is 1 over TS. 1 over TS. So ये आपके पास है. मसलन ये symbol 1 millisecond का symbol है. For example, the duration of that symbol is said to be 1 millisecond. तो कितने bit एक second में transmit करेगा ये? तो RS is equal to 1 millisecond. Is 1000 bits, 1000 symbols per second transmit हो जाएंगे. 1000 symbols per second transmit हो जाएंगे. So this is said to be a symbol rate. There is a difference between the symbol duration and the symbol rate. Now notice that the bit rate may be the multiple of the symbol rate. Symbol यानी एक symbol के अंदर तो बहुत सारे bit भेजे जा सकते हैं. As we see into the QPSK के अंदर हमने देखा QPSK. So K times of the symbol rate that will be equal to the bit rate. Bit rate के बराबर हो सकता है. Depending upon the modulation scheme. Modulation scheme के ऊपर depend हो सकता है. K may have a value 1, 2, 3, 4 and depends upon the modulation. जैसे कि BPSK के अंदर K 1 होता है, QPSK के अंदर K आपके पास 2 होता है. ठीक है. इसी तरह सिर्फ 1 और 2 नहीं, QPSK MRE scheme के अंदर we may have in a different number of the bits in a single symbol के अंदर किए जा सकते हैं. And that will be the number of symbols is equal to M is equal to 2 power of K. For instance, K is equal to 3. So it means to be this is 8 array scheme. If K is equal to 4, so it will said to be 16 array scheme. Okay? 16 array scheme. So we have a different number of the scheme. तो एक symbol से आप 3 bits यहाँ पे ट्रांसमिट 8 array के अंदर कर सकते हैं. One symbol can represent total of the 4 bits in a 16 array scheme के अंदर कर सकते हैं up to so on. Is it right? तो आप modulation scheme से you can enhance the data rate को enhance कर सकते हैं. तो ये तो आपकी symbol के बारे में discussion हो गई. अब मैं कोड के बारे में ये वाला आपका कोड है, is representing code. जैसे कि मैंने कहा कि C1 is a code, C2 is a code. Let's suppose this is a C1 code. The duration of the one chip. अच्छा इस सारे कोड की यानी ये चारों मिला के 1 -1 1 -1 इसकी जो ड्यूरेशन है वो TS के बराबर होती है. यानी चारों को मिला करके
एक सिंबल की ड्यूरेशन के बराबर होगी। नाउ यू सी दैट -1/2 से -1 है, सो 1/2 हमने लिया, दिस इज 1/2 -1/2, तो ये आपका 1/2 एक ड्यूरेशन के लिए रहा, फिर -1/2 दूसरे ड्यूरेशन के लिए थी, तो चारों के ड्यूरेशन मिला करके दैट विल बी इक्वल टू वन सिंबल ड्यूरेशन, एक सिंबल ड्यूरेशन। इसी तरह ये -1 एंड -1 एंड +1 एंड +1/2 दैट विल बी फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द अगेन फॉर द सेम, यानी कि इसकी जितनी जो आपकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन है और ये वो नंबर है जो हमने शर्ट के ऊपर लगाना है। ठीक है जी। सर ये टीसी और टीएस क्या है? टीसी आइए मैं बताने लगा हूँ। टीसी जो है, टीएस तो आपको पता लग गया ना, टीएस इज सेड टू बी द ड्यूरेशन ऑफ द सिंबल, पूरे सिंबल, यानी ये वो आपकी अपनी इंफॉर्मेशन है। टीसी इज द ड्यूरेशन ऑफ ईच चिप इन द कोड के अंदर एक जो स्मॉल ट्रांजिशन है, दिस इज सेड टू बी द ड्यूरेशन ऑफ द ईच चिप, सो उसको हम टीसी कहते हैं। What will be the duration of TC? TC की कितनी ड्यूरेशन होगी? TS के डिवाइडेड बाय, मसलन यहाँ पे TC आपके पास कितनी चिप्स थी इसके अंदर, एक छोटी ट्रांजिशन को हम क्या कहते हैं, 1 चिप, तो आपके पास एक कोड के अंदर 4 चिप्स मौजूद है, तो इस TS का मतलब एक चिप की ड्यूरेशन कितनी है, तो TS डिवाइड बाय 4, इसका चौथा हिस्सा एक चिप की ड्यूरेशन है। जिस तरह कि ये 1 is 1 chip, -1 is the other chip, 1 is the next chip and -1 is the next chip. So simply you see that is a TS divided by 4. So अगर ये आपका 4 मिलीसेकंड की ड्यूरेशन थी तो TC कितना होगा, 1 मिलीसेकंड का। That's fine. ठीक है, अब मैं TC को इस तरह लिख देता हूँ, 1/TC is equal to N divided by TS, तो 1/TC is equal to चिप रेट, RC के बराबर हो गया, हाँ जी, चिप रेट के बराबर हो गया, N अपनी जगह आ गया, और RS इज इक्वल टू सिंबल रेट, या बस सिंबल रेट आ गया। इज इट राइट? सो यू सी दैट इन दैट पर्टिकुलर स्लाइड यू कम टू नो दैट the chips or the codes are basically orthogonal to one another. It is fulfill the orthogonality principle को fulfill कर रहा है, number 1. Number 2, it is said to be a normalized code. ये दोनों, ये normalized भी है। Why it is normalized? क्या मैंने 1/4 से भी इसको डिवाइड किया, क्योंकि इसके अंदर 4 चिप्स थी, तो मैंने 1/4, अगर ये कुछ और नंबर ऑफ चिप्स होंगी तो फिर आप उससे डिवाइड करेंगे इसको, so that it will give you a normalized equal to 1. जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 अपने साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 देता है, और अगर हम इसको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं it will give you 0 and up to so on. It depends upon the modulation scheme. आपके पास इसकी चिप रेट को भी हमने देखा, हमने बिट रेट को भी अंदर देखा। Bear in mind, जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी टैग लगाते हैं, इसके ऊपर टैग लगाने का मतलब है कि इस कोड को मैं एक्चुअल इंफॉर्मेशन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होता है कि जो आपका चिप जो सिंबल रेट था उसकी आपके पास ड्यूरेशन ये थी, फ्रीक्वेंसी के अंदर आपकी ये थी, लेकिन व्हेन एवर आई मल्टीप्लाइड विद अ कोड तो मैंने उसका जो बैंडविड्थ है वो काफी इंक्रीज कर 4 टाइम्स कर दिया। मसलन सिंबल रेट की जो बैंडविड्थ थी वो 50 हर्ट्ज थी, तो जब मैंने चिप के साथ मल्टीप्लाई किया तो उसकी बैंडविड्थ अब 200 हर्ट्ज, क्योंकि 4 टाइम्स इंक्रीज करती है, क्योंकि आपकी चिप की ड्यूरेशन है 4 टाइम डिक्रीज हुई है, तो जब डिक्रीज होगी तो आपकी बैंडविड्थ के ऊपर वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी उसकी। सो दिस वाज द बेसिक ऑफ दैट basic concept of this CDMA technology या spread spectrum की technology. So any question you have in this we can discuss. तो सर इसके साथ समझ नहीं आई कि चिप की ड्यूरेशन कम करने से बैंडविड्थ ज्यादा होती है। ठीक है ना, अब देखें ना, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे, ठीक है, तो इस ये देखें जो TC तक की जो ड्यूरेशन है चिप्स है वो अगर ये 1 है और ये 1/2 है तो 1/2 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/2 हो जाएगा। TS दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
अब यस सर। TS 1/2 के बाद भी ये 1 ही है, तो इस ड्यूरेशन में 1 में ये कितनी हो जाएगी, -1/2 हो जाएगी। तो -1/2 मल्टीप्लाई बाय 1 विल गिव यू -1/2। फिर इसी तरह TS यहाँ सर। पे 1 है और यहाँ पे क्या है 1/2, तो ये तो मतलब है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे यही मिलेगा। अब देखिए, यस सर। अब ट्रांजिशंस कम हो गए। अब रेक्टेंगल की, अब यहाँ पे अगर ये 4 मिलीसेकंड था, तो अब ट्रांजिशन कहाँ आ रही है, 1 मिलीसेकंड के ऊपर, मतलब 4 टाइम कम ड्यूरेशन के ऊपर। अब ये वाला इंफॉर्मेशन मैं ट्रांसमिट करूंगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया ना, मल्टीप्लाई होने के बाद जो भी रिजल्ट आया तो मैंने वो ट्रांसमिट करना है। तो जब मैं वो ट्रांसमिट करूंगा तो आपकी रेक्टेंगल की या रेक्ट फंक्शन की ड्यूरेशन कम हो गई। व्हेन एवर द ड्यूरेशन कितनी कम हुई, 4 टाइम, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आप कितने इंक्रीज होते हैं, तो यू विल इंक्रीज 4 टाइम देयर, तो आप 4 टाइम वहां इंक्रीज हो जाते हैं। मसलन अगर आपके पास 50 हर्ट्ज का आपने लिया था, ये एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, 50 हर्ट्ज यहाँ तक था, तो जब मैंने ये सिंबल था तो फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर यहाँ, लेकिन आपने जब मल्टीप्लाई किया तो ये 1/TS था 50 हर्ट्ज का, तो आपने जब मल्टीप्लाई किया तो अब वही जो सिग्नल है वो 1/TC टाइम इन फ्रीक्वेंसी डोमेन इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये अगर 50 हर्ट्ज था तो यहाँ ये 4 टाइम इंक्रीज होके 200 हर्ट्ज तक पहुंच गया। तो दिस इज द एक्चुअल, सो द ड्यूरेशन, द बैंडविड्थ ऑफ द चिप का जो बैंडविड्थ है या कोड का जो बैंडविड्थ है वो n टाइम ऑफ द बैंडविड्थ, यानी अगर 4 था तो 4 टाइम ऑफ द बैंडविड्थ ऑफ द सिंबल जो है वो इज गोइंग टू बी इंक्रीज देयर, वो इंक्रीज हो गया जी। So this is all about the today's lecture, and you just have to be very concentratedly watch and go through this recordings, and whatever you have any difficulties that we will be discussing to the next class. Anyway, if you have got any question right now, I can answer as well. इंशाल्लाह। सर ये पिछला स्लाइड जरा करें जी सर, इसमें ये m जो है सर, ये 2k, ये जरा समझा दे, ये एरे की बात आपने की। अच्छा, ये this is you see that this is a modulation schemes. जी सर। Modulation schemes के अंदर you know that a BPSK, the one phase shift keying is representing a 1 bit. The other phase shift keying is representing the other bit. So we have got the 2 bits. Either it is a 0 or 1. Is it right? And whenever we talk about the QPSK, it's said to be a quadrature. ये आपके पास quadrature है। Quadrature का मतलब है कि आपके पास 4 quadrants हैं, and you can represent each particular vector for the representation of this. So if you have gotten a 4 vectors, so you can represent it how many bits? 2 bits with a one vector. अगर मैं उसी को एक्सटेंड करके 8 कर दूं, 8 वेक्टर्स कर दूं, तो 8 array scheme हो जाएगी वो। Which one? 8 array scheme. Because every particular vector is now going to be represented 3. Is 2 power of 3. 2 power of 3 is representing 8. So you have got total of 8. तो उसको हम कहते हैं कि 8. तो M को basically, M is a general word. Is said to be M array. So if it is an 8, if k is equal to 3, so M is equal to becomes how many vectors here? M is equal to 2 power of 3 is become 8. 8 हो जाएगा। तो M आपके पास 8 है। तो ये आपको सिर्फ वो बता रहा है, अगर आपके पास 16 वेक्टर्स हो, 16, वही क्वाड्रेंट के अंदर आप 16 वेक्टर्स बना दे, ठीक है, वो कंस्टेलेशन डायग्राम में अगर आपने 16 वेक्टर्स बना दिए, व्हाट वुड हैपन दैट total of each particular vector is representing a 4 bits rather than 2 or 3. वो फिर आप 4 आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो एक सिंबल के अंदर 4 बिट्स ले जाएगा, मतलब यही सिंबल होगा, वो इसके अंदर कितनी इंटेलिजेंस रखेगा कि 4 बिट्स को ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, तो अगर ये आपके पास QPS के होगा तो इसी सिंबल ड्यूरेशन के अंदर सिर्फ 2 बिट्स जाएंगे एंड अप टू सो ऑन। तो इसलिए हम इसको कहते हैं M array scheme, यानी 8 array, 16 array, 32 array एंड अप टू सो ऑन। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करे कि ये किसके पास जाता है कि फिर मैं उसे ये मेरे पास ही, क्योंकि मैंने इसको आई थिंक
ये सबसे पहले ऑनलाइन हुआ था। सर वो पिछली रिकॉर्डिंग भी नहीं है अभी अपलोड हुई। अच्छा, ये मेरे पास है आ गया।